So this session is regarding the code which is dealing with the project based. So we are going to deal with the student data. I'm going to open my table here. This is the drop option. And if I dropping this student data, so this will be stored here, this location. I'll have to copy this location. It will be used in next code. I'm just pasting here. So before going to import Databricks source. So here I'm going to import PySpark SparkSession and Spark text. Sachin, one question, like if we are importing Spark session, so I think we don't need to import this Spark context, right? No, Or because I mean, I was looking this one Spark context, what exactly? So this is is something like context. You are saying context. yes. Okay. So if we are like now after 2.0, like if our Spark session is there, if we are importing Spark session, then it will be take care of this Spark context. Maybe you're looking in terms of data frame. Was it data frame? Yes. Yes. So in case of data frame, scenario is different. And in case of CSV file and this one text file, we will Mhm. have to import this context. Like after 2.0, the version 2.0, I think it is not needed. I learn like this. Okay, I'll try to. Okay, yeah. So this is just importing this file, and I'm going to create RDD as file, paste filters dot first, the first, just taking the first header here and including the header. If you want to see the data set, you can print that including header. But I'm going to exclude this header point. I'm going to RDD dot filter the x x equals to headers, all the headers from my data set. Then I'm going to split this part. So this is the map, and I'm going to look at the map lambda x and x dot split. This is the split part. And if I run this code, I'll find the code set. So this is just showing without the header. So Mhm. let's see rdd dot collect. So we will have all the data set without the header. So it's Correct. not going to include that header point. Is all up it. If we have put this map, right? Yes, If we put the flat map, then it will be stored in a same fashion. Like जितने भी वो है Mhm. जितने भी ये वैल्यूज हैं वो सब एक लाइन में आ जाएंगे.
Okay. I'll show that flat map option. Okay. तो जितने भी ये वैल्यूज 18 है ना, दिस वोंट बी इंडिविजुअल आइडेंटिटी. ये जो सिंगल आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, दिस स्क्वायर Mm-hmm. ब्रैकेट, this won't be there. So after this flat opp.com, then 29 will get started, then female, and then after this db.com, this 28 will get started. So it won't treat it that this one is the another uh, command or the record, and just print that value in a single row. एक सिंगल रो में ही वैल्यू प्रिंट होगी. So that can be written the multiple flat map means like it would be like I'll okay. explain this flat map using that Okay. integer numbers file ना, जो Yeah. हमने सबसे पहले सैंपल फाइल लगी Mm-hmm. थी. Mm-hmm. So that flat map I'll show. So first for one हमारा जो है to count the number. For example, we are asked to count number. Mm-hmm. Can you see it's showing 1000? Why 1000? Because we had 1000 rows in that student that CSV print Okay. data dot CSV. We had 1000 rows Why it was the error yesterday? because at a single time, this Databricks community at a single time it couldn't initialize multiple RDD. तो Mm-hmm. इसमें इतना कैपेसिटी नहीं है, इतना इसमें अलाउ नहीं है कि एक बार में 2 आरडीडी या 3 या 4 आरडीडी एक बार में Okay. कंपाइल करें. So that was the error yesterday. So Mm-hmm. it's allowing only one RDD in a single time. Mm-hmm. Okay. In this. So we need to perform these tasks. Going to text here. So this is the first task. Number. Show the number of sprint in the code. I'm going to get in this file. Okay. So Mm-hmm. now what is the next code? Next is show the total number of achieved by the male and female candidate. Mm-hmm. Going to copy this Marks achieved by male and female. and paste it. Okay. So for this, going to create RDD2 RDD, which we is declared above, and it's storing all the data set of my chart. Correct. So RDD dot map, going to map my function and lambda x. So x will store x1. What is the x1? X1 is male and female column. And Okay. inside this, then I'll take the x5. Why x5? Because x5 is having that marks. If I look at the file, So, so this, so it would be like index, right? yes, It will start from the zero and then yes, so 0, F1. 1, 2, 3, 4, 5. So Yes. if you are bothered about the gender, so it Mm-hmm. would be 1. If I and we are also focusing on this marks, so this would be Mm-hmm. x5. Okay. Mm-hmm. So here we are having इन हमारा जो मार्क्स है वो किस फॉर्मेट में है. अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो ये हमारा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट में इट विल कम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट. So we will have to typecast into the
this one, integer. So this would be the integer point, right? Mm-hmm. So this would be the x1. It will map x1 and x2. केवल दो चीजें लेके आएगा, not other part. So using this, I'm going to override this RDT Mm-hmm. using the reduce key. So reduce key क्या करता है? It's going to create by category. Reduce by key. हाँ, reduce by key going to x comma y and then x plus y. What is x plus y? It's going to add all these column values. So reduce by key, how it is work in what exactly the functionality? Hmm. Okay. So can you see this one? Mm-hmm. This part. Yes. This is automatically treated by this value Mm-hmm. x1, this x and y. So but what is x and y here? X and y is actually adding this value here. Mm-hmm. This जो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है इसको हमारा ऐड कर. So what is RDD containing? अगर आप RDD की वैल्यू अभी इस लाइन के आफ्टर दिस लाइन इफ यू विल RDD, so Mm-hmm. it's containing not entire data set. सारे columns नहीं है, rather Mm-hmm. it's containing only this one, gender and marks, Mm-hmm. because we had map only two columns which is consisting only gender here and this is consisting only column. Okay. Now we have only column here till this point. Mm-hmm. After this point we just applied reduce key. So what is the reduce key? Reduce key is allowing us to add all these values. जितनी भी यहाँ पर integer value है उनको respectively add करके यहाँ पे दिखा रहा है. Okay. ठीक है? I show new notebook. Mm-hmm. That would be the, There is a one group by key as well, right? yes. So group by में क्या होता है? वो चीजों को sample, for example, Siva, comma 5, Manish 7, 8, 50. Copy this key to write this table, copy this, to this, to X. I'll look at the RDD
So it's showing this part, right? Correct. Okay. So now I have to reduce the, तो जैसे कि हमने RTT2 क्रिएट किया एंड दिस RTT डॉट लेट्स से फ्लैट मैप हम यूज करते हैं। फर्स्ट Okay. हमने यूज किया था मैप, आई एम गोइंग टू यूज फ्लैट मैप using the lambda. I'm going to x split, then going to RTT collect. So this is going to use flat map here. RDD. RDD is consisting what? This This one. name and this values, right? Can you Mm-hmm. see यहाँ पे कुछ space है सिवा के बाद में, Correct. and also सिवा 3 के बाद में यहाँ पे भी कुछ space है. So this might be the issue while adding some value, right? So let's Mm-hmm. see अगर ये proper ignore करता है then fine. Can you see? Siva, Manish, 7 and everything is showing in a single column. Mm-hmm. सिंगल रिकॉर्ड की तरह यहाँ पे शो हो रहा है, कोई भी हमारे यहाँ पर गैप नहीं है। ओके, सो फ्लैट मैप में जितना इनपुट है उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, आई थिंक सो। नहीं, उसमें क्या करेगा वो एक ही रिकॉर्ड के जैसे ही शो करेगा। हाँ, मतलब जैसे फर्स्ट हम लोग अगर एक मिनट, इफ वी सी द डेटा दिस आरडीडी नो, एक मिनट। तो इसमें एग्जैक्टली उतना ही रिकॉर्ड देता है आई बिलीव जितने की ये है, हम्म, जितना इनपुट है, हाँ और उसमें मोर देन रिकॉर्ड दे देगा फ्लैट मैप में। नहीं, उसमें तो एक ही रिकॉर्ड की तरह ट्रीट किया ना, उसमें हाँ, ये तो बोला। वो रिकॉर्ड्स, सी इफ वी गो टू द आरडीडी, जस्ट हम्म, scroll up. This is our RDD, right? Or हम्म, no? No, no. Go up. दिस Yeah, इज this is our RDD, right? So here we have like how many columns? How many records we have? 1 2 3 4 8। 8. So it would be 8 only in the map. हम्म, And I think in the flat map there will be more than 8, because it will be treat a single record as a, हम्म, no, as per I read actually. So this is something happening, right? Uh, am I correct, right? Or नहीं, आपने कहाँ पे पढ़ा? एक्चुअली ये जो सीरीज है, ये यहाँ पर जो कंपाइलर को बता रहा है, इट्स टेलिंग द कंपाइलर दिस वन इज द सिंगल रिकॉर्ड। इसमें hmm. कोई भी आपको अगर सेपरेट करना है यूजिंग द कोड, यू कैन सेपरेट इट, बट इट्स शोइंग रिप्रेजेंटिंग एंटायर वैल्यू इन अ सिंगल। Okay. Yeah, I mean in the flat map, right? हाँ, इन केस ऑफ हाँ, फ्लैट हाँ, मैप। हाँ, और इसमें जितने ले रहे हैं उतने ही आ रहे हैं ना? हाँ, जिसमें न्यू लाइन से जितनी भी वैल्यू है उन सबको हाँ, अलग अलग रिकॉर्ड की तरह रिप्रेजेंट करता है। ओके, 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। Now I'm going to use RDD3, which is just RDD, which is using RDD2, and हम्म, then I'm going to map this part. ठीक है? हम्म, हम्म, सबसे पहले फिर से हमने क्या करा इसको, then I'm going to use this art overwriting this RDD2 using the flat map. Now हम्म, this RDD is consisting flat map value, हम्म, and inside this flat map I'm going to parse x comma 1. So what is x comma 1? Explain this part. You show RTD dot collect, you will find this is the this one Siva 5 1, सबके आगे इसने 1 1 लगा दिया. So this ओके। is the additional part we are doing here. Map lambda x is the variable, then again x comma 1. Hmm. 1 इसमें Add मैप कर. ऐड कर दिया है।
Okay. So if if this, for example, this Siva is not there, Anish के आगे कोई value नहीं, Mm. then not have any value. Going to load this file in. This is x2. Going to paste it here. Overwrite this RDD and I'll print this RDD.collect. It's having only names. Okay. Now I'm going to, if I write this one map, so it will represent only values. अगर मैं flat map की तरह use करता हूँ, then it will show all the names in a single line. It won't treat it as a new identity. But here, if I add the one here, so what Mm-hmm. will be the value? It will add one, सबके आगे one. Why I'm doing this? Just Mm-hmm. explain this part. So using the one part, I'm going to add RDD3. तो अभी क्या है RDD3 में मेरा one one सब जगह ऐड हो गया. I'm going to use RDD3 with the reduce by key. Mm-hmm. And reduce by key, then I'm going to use lambda. With this lambda, I'm going to use x comma y both. So x comma y क्या है? Name and this value. Mm-hmm. So this name and value x plus y will be here. Then I'm going to collect this value. So we are adding those value, Yeah. right? Can you see? It's showing 2, 2, 2, 2 everywhere, everywhere. So Here we put x plus y, right? So, yes. okay. So that's why it is giving. If it is both are integer value, that it's gonna be sum, right? Yes. So this one is automatically there, automatically integer format. By default Mm-hmm. integer format में है. This is the reason we do not have to convert into the integer. But यहाँ Okay. पे originally अगर आप x maximum की वैल्यू देखोगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि RDD की वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट करें, Mm-hmm. for example, if I have this value RDD and if I want to print this RDD, Mm-hmm. so you will see this marks जो ये यहाँ पर है Mm-hmm. 20 sorry this one ये 26 marks जो है, Mm-hmm. this is showing in the format 59 email से पहले जो है, ये Mm-hmm. सारे के सारे हमारे मार्क्स हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है. कैन यू सी कोड्स अराउंड दिस वैल्यू? Mm-hmm. Quotes, yeah, that's a string. तो ये कोड्स हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है. Mm. With reason of this codes, we had to convert into integer first. Okay. तो जैसे वहां पर यहाँ पर एक 1 और 5 है, Mm. वैसे यहाँ पे ये वैल्यू हमारी नेम एंड 1 है. तो Mm-hmm. इसने 1 1 को क्या कर दिया, सबको 2 2 2 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सबकी आगे दो वैल्यू है, दो Mm-hmm. दो सबके पेयर. Mm-hmm. अगर सचिन 3 होते तो ये 3 शो करता, श्रेयास 4 होते तो यहाँ पे 4 शो होता. तो Mm-hmm. जितने नंबर ऑफ अकरेंस है उन सबको इसने क्या करा है, प्रीवियस वैल्यू को ऐड किया है. So Mm-hmm. reduce by key is just adding these second value जो हमारी ये second value और लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी पेयरिंग है उन सबको पेयर को शो कर रहा है. Mm. Okay. Okay, so and I'm just showing this RDD. This is value collect
here we had RDT2 as the map. Now I'm just using RDT2 dot map. Inside this map, I'm having x and x comma len of x. What is len of x? Length, right? Length. If I show RDT dot Dot collect collect, it will represent length. सबकी length जितनी भी है वहाँ पर. Okay, so Shiva 4, Manish 6, yes 7. Okay. I'm going to deploy RDT dot group by. Group by की जो है वो डिप्लॉय होगा. Then I'm going to use map values. तो अगर मैं map values नहीं करूंगा तो ये मेरी उस particular values को नहीं treat करेगा, values नहीं देगा. And also I need output in the format of list. I'm going to use this map. Can you see the showing? So map value, what exactly is does? Map value, it just picking the values from these keys. Okay. क्योंकि key and values two are different things. So I'm going to pick values from this group. And also I need this 4,4. It's not going to sum up. ये sum नहीं कर रहा है. This group by is just picking all these values. So शिवा में 4 4, मनीष में 6 7 7, तो जितनी भी उसकी मैक्सिमम वैल्यूज है वो यहाँ पर शो हो रही. Okay. It's not going to add up values. So if you will define without the, so it's going to show कि यहाँ पर कुछ map values में आपको कुछ value print करनी है. So if I do not pick map value, can you see it just showing the PySpark result, which is consisting my values. So resulting iterate value इस location पर PySpark के अंदर store हो रही है. This is showing address. Okay. आपकी जो एड्रेस है राइट हैंड साइड पे वो इस लोकेशन पे है, बट आई नीड सम वैल्यू फ्रॉम दिस लोकेशन. आपकी लोकेशंस देख रहे हो, दिस इज एंटायरली डिफरेंट. सो इन ऑर्डर टू शो वैल्यूज एट दिस लोकेशन, स्पार्क के अंदर, पाई स्पार्क के अंदर जो मेरी वैल्यूज है उनको शो करने के लिए आई हैड दिस मैप वैल्यू. Hey Spark, I need this map values. Which format? In the format of list. Then represent this way. Now it's showing rather Spark की conditions को शो करने की बजाय ये यहाँ पर इसकी वैल्यूज, अब सारे जो उस एड्रेस पे वैल्यू थी वो ये थी, तो अब वो एड्रेस शो नहीं कर रहे हैं, rather it's showing the values. Okay. So map values is showing. And once again, this is the difference between group by and this reduce by key. It's showing the respective values as well. It's showing this plus operator. We can deploy this plus operator. Okay. So basically, it's asked in interview, right? Group Yes. by and reduce by key. What Yes. exactly the difference? Map and flat map. Yes. Kind of. So I'll share this. This is in detail because I do not want to explain theory much in the lecture. People get bored. So No, so at least which are the important so I just keep focusing on hands-on practice using mhm, the practical. So GroupBy used to create group based on keys in RDD. For to work properly, data must be formatted on this one. So data must be in this pairing.
So first we are going to apple, ball, apple one. So this second option must be this one here. So it will create a new RDD by group by. So map value list are usually used to get group data set. If we won't include this map value list, this will represent the address by default. Okay. As far as this group reduced by key is, again, first few things are same, work properly data format. So example, apple, ball, apple. But when we see the output here, so it will show the lambda x plus y. So we can create an RDD which is consisting x plus y. So if this x plus y is bit confusing here. ये क्या समझ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे एप्पल और वन को ऐड कर रहा है, बॉल और वन को ऐड कर रहा है, एप्पल और वन को ऐड कर रहा है. बट एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये इनकी वैल्यूज को ऐड कर रहा है राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज. ओके. उसका एग्जाम्पल ये है कि जहां पे हमने ये मार्क्स का ऑप्शन लिखा है दिस शीट, इस इंटीजर x के कॉलम को ऐड करने के लिए क्यूमुलेटिव वैल्यूज ये हमें शो कर रही है. व्हाट इज दिस क्यूमुलेटिव वैल्यू? दिस इज दी this one, marks, total marks of my two Achieve while questions. famous. Okay. Yes. Let's see if you want to show the total number of students that have passed, failed. So 50 plus marks are required to pass the course. Course. This is the into right. This RDD3 is just saving, just copying this RDD, which is actually I'm going to create fast. This is RDD filter, filter it out, my data set based upon lambda x. Inside this x, this will have integer, and from the x5 column, what is the x5 column? This is consisting marks, Marks. Yes. and it Location. should be greater than 50. So I'm going to filter out values those are having greater than 50, and then count is there which is having this value. If I show the Past. right, Collect. so let's create one failed option. I can copy the entire line. The only difference will be there. It must have the column which is Less than. then and equal to. So this will consist failed candidate. I can print both these variable, passed or failed. 630370. Okay. If I wanted to print this one pass fail, then okay. Okay. So there is another way to write the same code. I can write the. So filter is like this If you filter want to function. filter, जैसे कि SQL में हम करते हैं where clause. Where clause, correct. तो ऐसा क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है. How would you SQL? How would you replace SQL query where clause to the RDD data frame or the text file or uh, this one Okay. CSV file? So the Be- answer is filter. okay. So because we are putting some conditions, Yeah. that's why we are applying the And filter. this condition is row wise condition, Yeah. not the Row. column wise operation. Yeah. 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 So if I want to print the same value, so I'm going to create pass2. This pass2 is using the same RDD and filter where clause, and this is filtering out lambda with the x. And again, if I simply write x5 greater than 50, that would be, it would be comparing string value, क्योंकि RDD3 में string के format में है सारे columns के name.
In order to convert typecasting, in order to perform typecasting here, I'll have to convert into the integer every this in x5. So this is the in typecasting integer x5, and let's count this value. So if I print this pass to, spelling is correct, same as above. Yes. So this is rtd3 dot filter and lambda x, this integer x is greater than 3. This is also showing 630. But here we can create field equals to, oh sorry, field 2 equals to past 2, and this past 2 is subtracted by rdd dot count. This rdd dot count will subtract this past 2. So total number 1000. So this is consisting 1000, this value, and this is Minus going to past subtract 1000 minus 630. So the field 2 value will be 370. so this is also showing the same value. So there are two ways to perform the same thing. Okay. तो इफ इंटरव्यू में पूछता है कि अगर आपको किसी भी डेटा में पास एंड फेल्ड या कुछ भी वैल्यू आपको निकालनी है जो कि कंडीशन बेस पे है, तो that's the necessary, we will have to compare this value using Okay. this filter part. Okay. So that value was in string, right? Yes. Okay. Then we put int So because of we everywhere, want a count. everywhere we want to perform mathematical operation. हम्म, So first and foremost, we will have to convert into the integer. तो अगर बट आपको अगर ये काउंट इस कर रहा है दैट्स ओके, बट अगर काउंट की जगह अगर मैं उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ नंबर 630, जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ 630 रिकॉर्ड्स, तो मुझे इंट नहीं लगा सकता ना फिर मैं. मतलब See, here we are. It's like because we are taking the count who are the past, right? So that's why we are putting the putting in, integer. no, we are comparing with 50. This is the Okay, reason we okay, are putting in yeah, this. yes, yeah, that's why. Count is straightforward command. No, अगर मुझे नंबर नाम ही प्रिंट कराना है 630 पूरे जितने भी पास हुए हैं. But question is, how would you count this या 630? दैट इज ये क्वेश्चंस तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे वो कराना रहता है तो यहाँ पर ये जो प्रिंट बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, जैसे कैसा है 630 रिकॉर्ड पीपल पास हुए हैं ना, जो जिसको कि इतने, अगर मुझे उनके नेम ही प्रिंट कर, नेम नहीं है ना उसमें डेटा सेट में अपने. नहीं, लेकिन वो है ना, यहाँ पर पहले हमारा जेंडर था ना, यहाँ पर रिड्यूस बाई की में हमारा ये था जेंडर मेल एंड फीमेल. ओके ओके. So in that scenario, we just converted only marks column. ओके, ठीक है. So did I answer your query? यस. एक में डेटा सेट बताना आप, वो कहाँ गया जो आईडीडी था. This one? ओके. सो अच्छा, अगर मान लो मुझे ये मार्क्स अगर सिर्फ नंबर प्रिंट करने हैं, नेम प्रिंट करना है, नेम. This one, ये name. हाँ, तो एग्जैक्टली मुझे देन इन दैट केस, अच्छा वो कंपेयर No कर, need to convert into the. डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा वो. हाँ, तब इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके. Because you cannot do any mathematical operation there. ओके. सो लाइक
if this question is asked, then this is the same like PySpark and Python as well, right? Yes. तो Okay. पाइथन और डेटा फ्रेम यू वुड से डेटा फ्रेम में भी कुछ हम इसी तरीके से फिल्टर लगाते हैं. तो Mm-hmm. दिस इज विद रेस्पेक्ट टू आरडीडी. तो Mm-hmm. मोस्टली आरडीडी क्यों होता है? आरडीडी जैसे मास्टर एंड स्लेव और मल्टीपल नोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड करने का एक मेथड है. तो Mm-hmm. उसकी वजह से हमें ये फिल्टर लैम्डा ये सब चीजें आनी चाहिए. मैप रिड्यूस की, ग्रुप बाई की, Mm-hmm. because we are going to integrate this automate process to the Azure Data Factory. तो Mm-hmm. Azure Data Factory में जब ये फाइल जाएगी तो Mm-hmm. वो क्या बोलेगा कि आपको हर महीने में एक फाइल दूंगा. तो Mm-hmm. हर महीने एक फाइल का मतलब है कि जैसे जुलाई में एक फाइल दी, Mm-hmm. देन अगस्त में एक फाइल दी, देन जैसे ही सितंबर फर्स्ट आएगा सो वी विल हैव न्यू फाइल. बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन या जो क्वेरी जो हम ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 करके, उन Mm-hmm. सब में एक ही तरह की क्वेरी चाहिए. जैसे कि मैं इन्फोसिस डेटा पे काम कर रहा हूँ, Mm-hmm. तो इन्फोसिस का कोई क्लाइंट है मास्टर कार्ड, Mm-hmm. वो मुझे क्या कर रहा है, हर महीने डेटा सेट दे रहा है. Mm-hmm. तो एज फार एज दिस क्वेरी इज कंसर्न, तो ये क्वेरी जो है वो सेम रहेगी. तो डेटा सेट अलग होगा, कोई इश्यू नहीं है. आई विल बी चेंजिंग दिस path from the day wise or the month wise. Rest of the code will be same. Mm-hmm. जो ये यहाँ पे आउटपुट है वो चेंज होता रहेगा और कोड में मुझे कोई भी चेंज नहीं करना रहेगा, Okay. बिकॉज कोड ये सारे महीने का सेम चलेगा. Mm-hmm. तो सितंबर आया, देन अक्टूबर आया, तो दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोमेशन. तो Mm-hmm. व्हाट वी डू इन दी आर्ट इन दी एजियो डेटा फैक्ट्री, एजियो डेटा फैक्ट्री में हम करते हैं कॉपी एक्टिविटी. Okay, we just delete activity, we Mm-hmm. just like on premises से हमें कहीं पे दूसरा करना है, कोई भी पेस्ट करना है, लोकेशन डी लोकेशन करना है, Mm-hmm. और वी आर फिल्टरिंग डेटा सेट. Mm-hmm. बट एट सम एक्सटेंशन इफ वी आर परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे एक्टिविटी होती हैं. Mm-hmm. बट एट सम एक्सटेंट जैसे कि आपको कोई ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देन यू विल हैव टू कम बैक हियर कि ये Mm-hmm. सारी कोडिंग के बेस पे ही ट्रांसफॉर्मेशन होंगे. Okay. बट एक बार आपने ये कोडिंग कर दी, देन Mm-hmm. द सेम कोडिंग विल वर्क अपॉन द सेम फाइल. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर में भी आए, तो Mm-hmm. आपको कोई भी दिक्कत नहीं है. Okay. आपका ऑटोमेशन कंप्लीट हो चुका है. Mm-hmm. क्योंकि जो सी आई सी डी पाइपलाइन है वो Mm-hmm. आपने एक बार क्रिएट कर दी, बट दैट क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. वो आपको ही करना होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या मांग रहा है. आपको वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, शो दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड पर कोर्स, या उस मास्टर कार्ड में कितने भी फ्रॉड डिटेक्शन है, और इन दैट मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड डेटा सेट हाउ मेनी आर ग्रेटर देन जुलाई, जुलाई से अगस्त का कौन सा क्रेडिट कार्ड है, या Mm-hmm. मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स किसके में हो रहे हैं, या बियॉन्ड 100% अपना यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है क्रेडिट कार्ड में. Mm-hmm. such operations are being asked in the data set, so you will have to apply this filter at that time. Mm-hmm. So, सचिन बेसिकली लाइक हम लोग जैसे ETL में करते हैं, मोस्टली कैसा होता है कि हम लोग के पास डेटा जो आता है जैसे बैंकिंग रिलेटेड डेटा है, ठीक है? तो क्या होता है कि जो डेटा हम लोग आते हैं उसके ऊपर जैसे एसक्यूएल से सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना? और फिर उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं। तो लाइक एसक्यूएल से ना करके अभी हम लोग इससे करेंगे, ये यू मीन टू हाँ, से, राइट? एक्चुअली सीक्वल की लिमिटेशन क्या है ना, whenever you have SQL you can give only structure and semi structure. एक तो ये इसका ड्रॉबैक है कि आप सेमी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप कर सकते. सीक्वल तो आप स्ट्रक्चर पे ही करोगे, हुँ। आप सेमी स्ट्रक्चर पे नहीं कर सकते. बट लेकिन हमारे जैसे बैंकिंग और ये सब इंडस्ट्री में तो स्ट्रक्चर डेटा ही मोस्टली आता है ना? और लेकिन लेकिन अगर आप जैसे रेडिट जैसी कंपनी देखो, जैसे हुँ, कि हुँ, आपकी रेडिट कंपनी है, हुँ, इन या लिंक्डइन जैसी कंपनी है, या फेसबुक है, ट्विटर है,
ये सब आगे काम करती हैं NLP बेस्ड चीजों पे। तो ट्विटर का अगर डेटा सेट आप उठाओगे, जैसे रेडिट ने ही बोला कि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स को आपको प्रोसेस करना है, तो वो आपका डेटा सेट सेमी स्ट्रक्चर का है। या जैसे किसी ने आपको फाइल दे दी जेसन की, या किसी ने फाइल दे दी आपको XML की, तो जेसन और XML इज नॉट स्ट्रक्चर डेटा सेट, फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा। So in that scenario, SQL is failed. So then you will have to either switch to NoSQL or CosmoDB. तो CosmoDB जो है ये सब इन चीजों को डील करेगी। सो एंड सचिन जैसे ऑल्सो मेरा ऑल्सो एक और चीज है, SQL के साथ लिमिटेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ कंपनी आस्क यू टू डिप्लॉय वेरी वेरी लेमन लैंग्वेज में लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन जो है मशीन लर्निंग का सबसे इजी सबसे बेसिक स्टैटिस्टिक एप्लीकेशन है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी डेटा में अगर हम देखते हैं कि अगर ये एज है, ये जेंडर है, ये कोर्स है, ये रोल नंबर है, फॉरगेट अबाउट द रोल नंबर एंड जेंडर, क्योंकि ये दोनों नेम जेंडर भी ले लेते हैं, नेम को और रोल नंबर को हम छोड़ देते हैं, so these are not dynamic columns. If I'm picking this one is picking this gender, क्योंकि जेंडर भी इफेक्ट करता है, picking this course, and I'm asking to predict marks, क्योंकि फ्यूचर में इस कैंडिडेट के कितने मार्क्स आएंगे इस शीट के बेसिस पे आप बताओ। तो आपको वो क्या करेगा, एक नया वैल्यू दे देगा कि लेट्स से this is column, hey Manish, your objective is to identifying this one. Class, what is the identification? You say, they will say कि upcoming future में हमारे पास कस्टमर आ रहा है, 31 एज का है, and this is the male candidate and he is obtaining DSA, and what would be the marks that candidate, उसका मार्क्स क्या होगा। तो ऑब्वियसली ML की बहुत सारी एल्गोरिथम यहाँ पे डिप्लॉय हो सकती है, डीप लर्निंग, CNN, बट वेरी फर्स्ट लैंग्वेज में आप जो डिप्लॉय करोगे दैट वुड बी दिस वन, लीनियर रिग्रेशन। और अगर बाइनरी डेटा है सो यू विल बी यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर वहां पे यस और नो की तरह आपका टारगेट कॉलम है, सो यू विल बी डिप्लॉइंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। So in order to deploy logistic regression in linear regression, will you use SQL? नो। जबकि ये ML के सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट स्टैटिस्टिक के वो हैं। मैंने अभी डिसीजन ट्री या आपके रैंडम फॉरेस्ट या आपके KNN या नियरेस्ट नेबर, ये सब तो बात ही नहीं करी है। मैंने बहुत सिंपल एक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गो डिप्लॉय करने के लिए आपको बोला है, जो कि लेकिन सचिन सी दिस इज फाइन, लेकिन मेरा कैसा पर्पस है? आर वी रिकॉर्डिंग और वी स्टॉप? यस 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 कैन वी स्टॉप? यस, start recording here. So let's move to the next question and let's bind this next query. So this is the fourth one. So what is the fourth? So first it will copy the RDD. This is the RDD and just deploy X3. So what is the X3 here? Marks column. Because we need to calculate the total number of students per course. So if you remember that we had the X3. So what is the X3 here? So if you look at this one, so this is 0, 1, 2, 3. So this one is the X3 which is consisting course. So I'm focusing on this course. This is the reason I just picked this X3. And X1, you have seen this X1 is the addition 1 we just add. And of course, we are going to deploy RDD reduce by key. It will show summation, जो वहां पे मनीष, सचिन और वो सब जो यहाँ पे किया था, this one x plus y and everything, it's showing the total number of that course.
So we are taking advantage of that reduce by key. Okay. So this is the learning part. If someone asks to add some column or values, so वहाँ पे जैसे group by होता है हमारे SQL में, here we had the reduce by key. Okay. So the Show the average. Okay. total number of marks achieved per course. %. हाँ, each course में हमें कैसे करना है? So inside each course we need to marks. So of course we will have to convert into the integer first, then reduce by key x plus y. Why? Because it's asking marks, total marks. It's not quantity. It's not row number. It's asking the counts, right? Total marks. Yes. Previously we had total number, but here we had mathematical operation, which is total marks, and marks is obviously randomly showing. कि वो 1111 नहीं है, बल्कि total marks के अलग-अलग values हैं. This is the reason we are deploying integer x here and then x plus. Is it clear? Yes. Okay. So the average marks that तो अब average marks हम सोच मतलब calculate कर रहे हैं. So of course we need to convert into the integer first. Yes. So here I'm going to find the first. I need to create a RDD6. Going to store this RDD. This x3 and this x5. 3 and x5. So x3 is course column and x5 is the marks column. To replace this RDD6 by reduce by key, it's going to add. So x0 plus x1 is what? It's going to add this value, marks value. And x1 is what? This is going to add all these average value. Okay. If you look at RDD6 dot collect, so can you see it's showing RDD key, respectively it's showing total marks and total course. So total RDD के course कितने हैं? 157. And what is the marks value here? This is the total mark. Okay. Now I need this. I'm going to divide this one. So ये जो total value है, this one, this is 10. This is the total value. So average कैसा होता है कि divide by this, Correct. right? So overwrite, divide this. Can you see? This is showing this. But I need some map values as well. So this is showing me value. So I'll have to imply this map value. Right? So once we had this value, so we can show the average. Task minimum. Maximum. Okay. Just so what is the X if here? Going to compare because reduced by key is just comparing all these values. So
it's just comparing x3. So x3 is what? It's a codes column. X5 is what? It's a marks column. And it's going to compare x comma y one by one. So for example is dv. So dv में ये क्या कर रहा है? It's comparing row wise. So whenever it's finding this is the dv, going to add one insert. So here it's finding dv. So इसका वैल्यू क्या है? 59. ठीक है, इसकी Mm-hmm. इनिशियल वैल्यू रेंज is 62. It's having 45. It's having dv. So again अगर dv मिला, so now it's comparing dv is greater than 59 or what? If it is greater than 59, then it will store the single value. क्योंकि यहाँ पे ये क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ पे ये चेक कर रहा है if x is greater than y, Mm-hmm. else y. So it's going to store x अगर ये वैल्यू बड़ा है. This is the maximum value. Mm-hmm. ठीक है, तो हर रो में ये ग्रुप बाई क्या करेगा? इस db की वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा पुरानी वैल्यू से. So whether Correct. this is the 59 is greater than 29, otherwise it won't overwrite. Now next, this would be the 59, not the 29. This DSA is what? DSA is first value 41. MVC is 32. This OPS is again 69. ऐसे ही ये क्लाउड को चेक करेगा. अब 85 है, प्रीवियस वैल्यू 62 है, तो ये 85 को कंपेयर करेगा 62 से. नाउ इट्स गोइंग टू Mm-hmm. अपडेट दिस वैल्यू इन फ्रंट ऑफ क्लाउड. एंड Mm-hmm. एमवीसी की नेक्स्ट वैल्यू 64 है, प्रीवियस वैल्यू 32, तो ये 64 से अपडेट कर दे. ऐसा ये रो वाइज ऑपरेशन चल रहा है पूरे में, पूरे नीचे तक चलेगा. And this is how we are just printing this value. This statement, is it clear how it's going to calculate the maximum value? Yes, it is comparing with one of Row wise, it's a bit row wise. confusing. Mm. Also it's a bit confusing कि ये कॉलम को कैसे रीड कर रहा है. तो अगर आप ये 98 देख रहे हो, तो ये पूरे कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू है Correct. out of the cloud. And who is going to pick that cloud? Reduce by key is going to categorize all these columns. Mm-hmm. एंड ऑल्सो ये वाला वैल्यू मिनिमम है, क्लाउड में ये मिनिमम है, एमवीसी ये मिनिमम है, ओप्स में ये मिनिमम है. दैट्स रो वाइज ऑपरेशन. अब आप देखो ये पूरा रो के ऊपर काम कर रहा है, बट Mm-hmm. जस्ट बिकॉज ऑफ RDD7 दिस वर्क इज वेरी स्मॉल हियर. Mm. वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमें आउटपुट मिल रहा है. और अगर ये सीक्वल या कुछ और होगा तो हो सकता है ये हमें कुछ टाइम टेकन प्रोसेस. Okay. लास्ट ऑफ इट शो द एवरेज एज एंड मेल कैटेगरी. Mm-hmm. So the average age of So the this male. is the x1. X1 is what? Gender. Mm-hmm. And x0 is what? Age. So if you look at this x0, x0 is age column, this one, and x1 is the gender. Mm-hmm. Age और gender पे हमें focus करना है. This is the reason we selected x0 and x1, and then we just add up this x0 and x1 and divide. Reduced by K. ये क्या कर रहा है? ये हमारे सारे इनकी वैल्यू को, जितनी भी ये वाली वैल्यू इसको ऐड कर रहा है, और Mm-hmm. ये वन किसको ऐड कर रहा है? ये वाले वैल्यू को. Then Okay. eventually we are actually this is not adding. ये आपको लग रहा है कि ये आपके जेंडर को ऐड कर रहा है और ये इसकी एज को ऐड कर रहा है. नो, ये जेंडर को ऐड नहीं कर रहा है. जब आपने इसको फिल्टर कर दिया तो ये इसकी
एज को ऐड कर रहा है. दिस इज द एडिशन ऑफ एजेस. Mm-hmm. दिस इज द नंबर ऑफ वैल्यूज. दिस इज द वन जो हम बाद में ये वन ऐड कर रहे हैं. एंड वाई वन? बिकॉज दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ ईच वैल्यू. Mm-hmm. जो हमारे मेल एंड फीमेल है, तो जो भी नंबर होंगे उससे ये डिवाइड कर रहा है. इवेंचुअली वी आर गेटिंग दी नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इंडिविजुअली. Mm-hmm. और मैं डी टी एट डॉट कलेक्ट यहाँ प्रिंट करता हूँ to comment this thing, so you will find the output here. Can you see? This is showing x0 and x0 what? Total number of A's. And this is total number of count of female. This is total number of count. What is the formula? Just divide this value by 501. Divide this value by 5499. Okay. Eventually, you will get the average of female and male respectively. And division part जो है हम next line में करें. Okay. So you are dividing, and this one is plus. Okay. Hmm. अब चाहिए वैल्यू नहीं कि बाद में डिवीजन के बाद में. Hmm. So I'm going to export this notebook. This is A4 and load this session and also giving one kind of homework so that Mm-hmm. you just change the data set and then Mm-hmm. try to exercise this part. Okay. PySpark session 8 it's just good. Okay. So Sachin, once this Databricks is terminated, no, again I have to create another, compute session, right? Yes. Because the same session I'm not able to restart. Same If you keep it for 2 hours, cluster. then it is automatically detect. अगर आप 2 hours तक उसको कुछ नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है, डिटैच नहीं, कर. लेकिन वो डिटेच तो हो गया, लेकिन सेम जो मैंने क्रिएट किया उसको रीस्टार्ट नहीं हो सकता है क्या वो? हो सकता है. तो वो नहीं होता, मुझे तो हर बार नया क्रिएट Maybe, करना maybe just because of we are using free edition and community edition now, that पड़ता। option is not there. In upcoming session, if you will using, oh, this is a very good data set, hospital charges. सो मैं So एक्चुअली if you ये will cloud version, Azure cloud में we had full flash operation. ओके। So there you can use. So this is the data set I'm going to upload. So here we have the average payment and this drug operation and provider and everything. So you can work over this data set. जैसे इसका cost क्या है, किस किस hospital data set पे, ये hospital names are repeating itself in this column, ओके। and this provider city is also repeating, and you can find the total payment, total coverage charge or the average charge.
or the charge, maximum charge, whatever question we try to. सो इसमें डुप्लीकेट्स वगैरह भी निकाल सकते हैं ना हम लोग? Yes, yes, yes. Charges to upload this. It. Okay, so any और इसमें जैसे हम लोग ये फंक्शंस वगैरह भी ट्राई करेंगे ना, जो अ, जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशंस के फंक्शंस होते हैं, हाँ, लाइक वो हम जब डेटा फ्रेम पे कन्वर्ट हाँ करेंगे ना, हाँ हाँ देन वी विल सी मोर ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसे ही मैं कोई और प्रोजेक्ट उठा लिया, उसमें ही जो क्वेश्चन क्वेरी आएंगी हम्म, और आपको सॉल्व करना होगा, देन वी विल सी दी रेस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हम लोग एसक्यूएल में जो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सेम हम लोग इसमें पाइथन में हाँ, और क्योंकि दिस इज गिविंग टू ऑप्शंस, पाइथन और सीक्वल। तो आप हम्म, अगर सीक्वल पे करोगे देन ये वाले सारे कोड एरर दिखाना शुरू कर। हाँ वो तो है। दैट्स, और हम लोग एसक्यूएल ही यूज करते थे जनरली, एक हाँ, टेबल डेटा फ्रेम क्रिएट करके। हाँ, ओके। ओके, थैंक और यू। सचिन,